Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey was worried. It was not just the fat, basically. So Mrs. Pumphrey was worried. She was worried when dog Tricky was it had become very ill. So there was a situation when Tricky was not able to move at all. He had bouts of vomiting. वो हिल भी नहीं पा रहा था, याद है? हिल नहीं पा रहा था. He had bouts of vomiting and he was not eating anything. तो उल्टी बहुत ज्यादा कर रहा था. He was not able to move. He was not responding to anyone. He was not eating anything. That is why Mrs. Pumphrey was worried about Tricky. कि पता नहीं क्या हो गया इसको. I have been feeding him well. उसके बाद में भी तबीयत कैसे खराब होगी. So this is the reason. Then second one, what does she do to help him? Is she wise in this? So to help him, तो उसने obviously Mrs. Pumphrey had tried everything. इससे पहले जो कुछ भी हो सकता था, on her own she had tried. Now she decided to call the narrator. The narrator was a surgeon, a veterinarian. So he was basically a doctor for animals. So she called him to help Tricky. And yes, this was a very wise decision. Why was it wise? Because it is better for an expert to deal with such conditions. अगर तबीयत खराब होगी, it is better to call a doctor rather than to do something on her own. तो अगर कुछ खुद करने लग रही होती, for example, she would have been feeding him wine. Wine पिला रही है, तो that would have been a very unwise thing to do. But this was quite a wise thing to do, to call a doctor. Who does I refer to in this story? So I refers to the narrator. तो narrator का नाम क्या है? Mr. Harriet. So I refers to the narrator, Mr. Harriet, who is veterinarian in this particular story. Okay. So next question: is the narrator as rich as Tricky's mistress? तो Tricky की mistress कौन है? Mrs. Pumphrey. And the narrator is Mr. Harriet, the doctor. So is the narrator as rich as Tricky's mistress? देखो, on the basis of what has been given in the chapter, it appears that he is not. अब क्या क्या दिया हुआ है? Let us discuss that. Number one, Tricky's mistress has a lot of servants. Servants बहुत ज़्यादा हैं. ये कब पता चलता है? When the narrator or the doctor was taking Tricky with him. तो सारे के सारे servants आते हैं and they were doing all the work. जो भी Tricky का सामान रह जाता है, they were putting that stuff into the doctor's car. So she has a lot of servants. ये तो पक्का है. Then number two, the kind of things that she has for Tricky. So things for Tricky. तो एक डॉग के लिए क्या क्या उसने रखा हुआ है? She has separate bowls for his breakfast, dinner, breakfast, lunch and supper. Supper means dinner. तो हर एक के लिए अलग अलग बाउल है. Tricky has different beds for different times. कि इस टाइम में सोना है तो ये वाला बेड है, दूसरे टाइम में दूसरा बेड है. Cushions वगैरह उसके regularly change होते हैं. So you can look at that kind of pampering that he gets. So इन सब चीजों से, और हाँ बाद में जो when she gets to know that Tricky is recovering, then she starts sending 2 dozens of eggs. 2 dozen egg भेज रही हैं and bottle of wine every day followed by a brandy. तो इतनी सारी चीजें भेज रही है just for a dog, जबकि डॉग को उसकी जरूरत नहीं है. This also shows that she is quite rich. Then also when the Mrs. Pumphrey comes to take Tricky back home, so she comes in a 30 feet black, shiny black vehicle. So 30 feet car है, तो 30 feet, that means it is a very long car. तो ideally limousines होती है ना ज़्यादा बड़ी, तो limousines can be afforded by very rich people. तो and it was driven by a chauffeur, कि अलग से ड्राइवर भी है. चॉफर इज अ वेरी फॉर्मल ड्राइवर, जो यूनिफॉर्म वगैरह पहन के चलाते हैं ना गाड़ियां, तो वो. सो इन सबसे पता चल रहा है कि शी इज वेरी रिच. नाउ लेट अस कंपेयर दिस विद द नरेटर. अब नरेटर का क्या है? नरेटर के पास में एक अपना ही छोटी सी कार है, और व्हेन द सर्वेंट्स ऑफ मिसेस पंफ्री
were putting stuff into his car, so what was his first thought? कि भाई इतना सामान कहाँ से आएगा? That the car will not be able to accommodate so much of stuff, so much of things that the servants were putting in. Number one is this. Number two, rather than giving Tricky a nice big bed or something, he made a cardboard bed for him. तो जैसे बाकी डॉग्स का था वैसे ही कार्डबोर्ड का बेड बना दिया फॉर ट्रिकी एज वेल. दैट मींस ही इज डूइंग सिंपलर थिंग्स. कि इसके पास में शायद प्रॉब्ली इतने पैसे नहीं है एज कंपेयर टू मिसेस पम्फ्री कि इतना स्पेंड कर सके ओवर अ डॉग. देन व्हेन मिसेस पम्फ्री सेंट those eggs, wines and brandy, he along with his partners enjoyed that a lot. कि मतलब it was fulfilling for him कि भाई इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी, that you are getting all these things for free. ऐसे thoughts उसी के पास में आएंगे who doesn't get these things very regularly. So this also shows that the narrator is not as rich as Tricky's mistress. तो ये 3 पॉइंट तो हो गए. ट्रिकी की मिस्ट्रेस क्यों रिच है, और इन्हीं से रिलेटेड ही वो पॉइंट्स आप शो कर दोगे कि किस तरीके से द नरेटर इज नॉट एज रिच. तो सर्वेंट्स भी इसके पास में नहीं थे. जो भी डिस्क्रिप्शन है, ही डिडंट हैव एनी सर्वेंट्स, ही हैड पार्टनर्स, और पार्टनर्स के साथ में एंजॉय करता था बाय ड्रिंकिंग द हैविंग द एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग द वाइन एंड ब्रांडी. और एक और थॉट आया था कि मतलब ही हैड अ थॉट ऑफ कीपिंग ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. तो ऐसा थॉट भी किसको आएगा? समवन हु इज नॉट मच रिच एंड सच अ पर्सन वुड वांट कि भाई जो फ्री का सामान आ रहा है दैट कीप्स ऑन कमिंग. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? सो हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग? सो if you are able to recall the story, he did not do anything to treat him. He merely left the dog as it is. He did not feed him for 2 continuous days. So continuously for 2 days he did not feed him. On the 3rd day, the Tricky himself started to move around. He got to know about the surroundings, and then when the other dogs had his food, so the doctor noticed Tricky licking some of the bowls. एक बार जब 2 दिन तक कुछ नहीं खिलाया, after that the doctor noticed that Tricky was licking the other dogs' bowls. वो खाना डालता था दूसरे कुत्तों के लिए, so he was licking those bowls. So he got to know that now he is hungry and now he is ready to eat. तो उसके बाद में he from the 4th day onwards he started giving him some food. तो पहले कुछ नहीं किया, and apart from that he allowed Tricky to mix with other dogs. एक बार mix हो गया, he started running with those dogs and he started getting a good exercise. So but merely through common sense, he did not do much to treat the dog. He let the dog be a dog. So that is how he treated the dog. The next one, why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? तो ये तो अभी भी डिस्कस किया था. Why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? Because he was receiving 2 dozens of eggs, a bottle of wine and brandy every day. So he used to enjoy this a lot. कि free में eggs मिल रहे हैं, wine for lunch and brandy at the dinner time. So he was tempted by this thought as till the time Tricky is going to be here, he is going to continuously receive these perks. So in order to continue these perks, he got a thought कि इसको रख लेते हैं to keep him as a permanent guest. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? So Mrs. Pumphrey thinks the dog's recovery is a triumph of surgery. देखो, first of all, Mrs. Pumphrey thought that the dog was operated on. कि उसको ऐसे ठीक नहीं किया है. Over 14 days, the doctor was operating on the dog. That means he had conducted a surgery on Tricky. That is why he has recovered. और जब
when Mrs. Pumphrey had called the doctor, Tricky was in very bad shape. He couldn't move. He had vomiting and all. He was not eating. But now, at the end of the story, when Mrs. Pumphrey came to receive Tricky, so he appeared very healthy. He appeared very hard muscled, and he straight away jumped onto Mrs. Pumphrey. So there was a drastic transformation कि जो dog मरने वाला सा हो रहा था अभी, it was transformed into a very lively dog, a very muscular dog. So Mrs. Pumphrey thought that it was because of the surgery that the doctor had conducted on Tricky. लेकिन actually क्या हुआ था? There was no surgery conducted. Tricky was just given a better routine. He was given less food and a better routine, जिसकी वजह से he recovered. The first question: what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as a full of common sense? You say he is tactful as well as full of common sense. तो ये बताना है कि कैरेक्टर कैसा था. जो नरेटर हैं हमारे जेम्स एलियट, तो उनका कैरेक्टर कैसा था? Is he a very tactful person? Tactful क्या होता है कि जो लोगों को समझता है, वो प्लान कर सकता है दिमाग के अंदर, अपना टैक्टिक्स प्रॉपर्ली बना सकता है. और कॉमन सेंस वाला कैसा होता है कि मतलब कुछ चीजें जो नॉर्मली हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर कुछ छोटा मोटा भी करना होता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेके आएंगे. तो फॉर एग्जांपल, अगर आंखों पर जोर पड़ रहा है पढ़ाई करते हुए, हाँ, तो कोई यूं कहेगा कि भाई शायद आंखें कमजोर हो गई है, हाँ, तो डॉक्टर के पास में लेके जाएगा, चेकअप वगैरह कराएगा, स्पेक्स वगैरह खरीद लाएगा. एक ऑल्टरनेटिव कॉमन सेंसिकल सोल्यूशन हो सकता है कि क्या पता लाइट कम हो ये रूम के अंदर, तो लाइट लगा लो, ऑटोमेटिकली दिखना क्लियर हो जाएगा. तो सच अ पर्सन इज ऑफ कॉमन सेंस कि जो बेसिक चीज, किसी चीज का बेसिक सोल्यूशन हो सकता है, उसकी जगह ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना सोच रहा हो. सिंपली बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन दे कैन फाइंड द सॉल्यूशन. तो जो नरेटर है, तो उनका अगर हम एनालाइज करते हैं तो ही इज बोथ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. अब टैक्टफुल कैसे? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स पीपल. ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड मिसेस पम्फ्री. तो मिसेस पम्फ्री कैसी है? ही अंडरस्टूड हाउ शी एक्ट्स और क्या करके ही इज गोइंग टू क्योर ट्रिकी. सो understanding Mrs. Pumphrey, how she did, he understood that he had to take Tricky away from her. He, at least for 2 weeks, I have to keep Tricky away from Mrs. Pumphrey. So that is why he suggested that he has to be kept under observation for at least 14 days. So this shows that he is tactful. Apart from that, जो वो thought आया ना कि let us keep Tricky as permanent guest. When he started getting all the perks, जो भी eggs, brandy वगैरह आ रही थी, so a thought came to his mind that if I keep Tricky for a longer period as a permanent guest, then I'll keep on getting these things. तो ये भी क्या है? He is being tactful कि अगर ये कर लूंगा तो this can be a result. So he is planning for a longer term. खैर उसने ऐसा नहीं किया. At the same time, he is also full of common sense. How? Because rather than giving useless medicines कि अलग से ट्रीटमेंट करने को, तो होता है ना कि अगर कोई मोटा हो जाता है तो many doctors suggest the patient कि आप लिपोसक्शन करा लो, कि मोटापा जो फैट है ना वो एक्स्ट्रा फैट निकाल लो. इंस्टेड सजेस्ट क्या कर सकते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर लो रेगुलरली. So a similar situation happened here. Rather than giving a complex treatment to Tricky, the doctor did not do anything much. He just followed a normal routine. He fed him less. कि ज्यादा खाने की दिक्कत है तो कम खाना खिला रहा है. 2 दिन तक खिलाया ही नहीं. He third day भी इतना कुछ नहीं दिया. From the 4th day onwards, he started feeding him, and he gave him a lot of exercise with other dogs. So this shows that he was full of common sense. ठीक है, तो 2 पार्ट हैं इसके.
टैक्टफुल भी एक्सप्लेन करेंगे और फुल ऑफ कॉमन सेंस भी एक्सप्लेन करेंगे. दोनों के रीजंस अलग अलग से देंगे हम सेपरेट पैराग्राफ्स में. नाउ सेकंड वन, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? तो ये एंड का है. ऑब्वियसली ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम व्हेन ही सीज मिसेस पंफ्री, सो ही गेट्स वेरी एक्साइटेड and he starts licking her face and barking at her. तो ये वाली लाइन है that Mrs. Pumphrey had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. So this shows that Tricky was very happy to go home. Of course, a dog is going to be happy to meet his human. So because Mrs. Pumphrey was the dog's human, so he was definitely happy. Loyal होते हैं ना dogs, तो they become very happy to meet their old friends. So what do you think is going to happen now? So the same thing which happened at the beginning is going to again happen now, because now again Tricky is going to be fed more. कि वापस से वही routine शुरू हो जाएगा. Mrs. Pumphrey is going to feed him a lot and ultimately he is going to turn back into the old Tricky as he had come before coming to the surgery. Third, do you think this is a real life episode or a mere fiction, or is it a mixture of both? So do you think it is a real life episode, that this thing has happened, actually happened, or do you think it is a work of fiction? Fiction क्या होता है? A work of mind, कि imaginary है or is it real? So according to me, it is both. It is a mixture of both, a real life episode and fiction as well. Fiction mixed in between. So probably the real life episode क्यों हो सकता है? Because we generally tend to find such kind of characters. जैसे Mrs. Pumphrey जैसे rich लोग होते हैं ना, तो we tend to find such characters in our society who pamper their dogs a lot. कि humans की care नहीं करेंगे, dogs की बहुत ज़्यादा care करेंगे. So dogs are sleeping inside in an air conditioned room. They are given the most luxurious treatment. तो इस तरीके के cases मिलते हैं. So that is why it is a real life. It is probably drawn from a real life. लेकिन it also appears to be a fiction, a work of fiction as well. अब fiction कैसे नजर आता है? क्योंकि कुछ जगह पे है ना, it is probably exaggerated a lot. जैसे sending wine and brandy for the dog. तो dogs को normally wine और brandy feed नहीं करते हैं. It is unhealthy for them. ना स्वीट्स फीड करते हैं, अगर क्योंकि डॉग्स आर डायबिटिक बाय बर्थ, तो डॉग्स को स्वीट्स फीड नहीं करनी चाहिए. कुछ भी शुगरी आप दोगे, सो इट इज गोइंग टू हार्म देम मोर. तो शायद ये एग्जैजरेट ज्यादा किया हुआ है इन इस सेंस में, टू मेक इट मोर ह्यूमरस. सो maybe the humor part या जो exaggerations हैं, that is a work of fiction and rest is drawn from a real life episode. So this is how you need to write this particular answer. Okay, now think about it. First, this episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Indulgent means indulgent is derived from the word indulging. So indulging means you are into something too much. कि मतलब you are engrossed into a particular thing. For example, if you start playing mobile games, तो PUBG पता नहीं, अभी शायद PUBG पॉपुलर है अभी भी, या कोई और नया गेम आ गया हो, Candy Crush probably. So लोग क्या करते हैं? They indulge into these game a lot, कि बहुत ज्यादा indulge होने लग जाते हैं. They are engrossed into these games कि पूरा दिन 24 घंटे they keep on playing these games. So this is what is being indulgent. So she is foolishly indulgent. That means she is not applying her mind and she is doing something wrong while being indulgent. So indulgent word exactly गलत नहीं है, because you can be indulgent in your work as well. वो वर्क की तरफ इतने डेडिकेटेड हो कि यू आर वर्किंग ऑल द टाइम.
So she is foolishly indulgent because her indulgence has resulted in harming someone else. ये ट्रिकी की हेल्थ खराब होगी because of her indulgence. That is why it is called foolishly indulgent. So she is foolishly indulgent perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly, or can their actions harm others? So क्या ऐसे लोग सिर्फ silly होते हैं? That means silly पहले ही slack है. I mean they tend to do such things, such nonsensical things, or can their action cause harm to others? तो एक तो evidence यहाँ पर दिखाई देता है कि how harm is caused to the dogs, to the dog because of overindulgent action of Mrs. Pumphrey. अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं अभी, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो as soon as the news of the lockdown was given, तो ज्यादातर जो those people who could afford, तो वो क्या कर रहे थे? They were hoarding things कि मेरे पास में ठीक ठाक पैसे हैं, so what मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, I'm just saying कि probably let's say I am a very rich person, so what a rich person was doing, that what rich people were doing basically, so they were hoarding things कि 6-6 महीने का स्टॉक खरीद लिया और वो स्टोर करके रख लिया घर में कि पता नहीं लॉकडाउन कब तक का चलेगा. तो ये अपने वो this was being foolish कि 6 महीने तक का स्टॉक आपने कर लिया, and because of that actual shortage of food resulted. कि बाकी लोग भी सोचने लगे कि ये सही में शॉर्टेज हो रही है क्योंकि चीजें अवेलेबल नहीं हो रही, क्योंकि जो रिच हैं उन्होंने पहले से ही स्टॉक करके रख लिया है. नाउ दिस एक्शन हार्म्ड अदर्स, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अब उनको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया. जो रेट्स, जो चीजों के रेट्स थे इन द मार्केट, दोज इंक्रीज्ड, ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई. एक और क्या हो रहा है आजकल कोविड के टाइम में, जो एक्स्ट्रा रिच है ना, अभी कोविड में क्या है, अगर कंडीशन ज्यादा वर्सन हो जाती है, यू रिक्वायर वेंटिलेटर्स, आपको रेस्पिरेशन एड करने के लिए वेंटिलेटर्स चाहिए होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में मिलते हैं. अब काफी अमीर लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड परचेजिंग वेंटिलेटर्स अपने पर्सनल यूज के लिए, वेंटिलेटर खरीदा, घर में रख लिया. सो नाउ दिस, एक तो सोसाइटी के अंदर जो बीमार हो रहे हैं उनके लिए वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल्स में वैसे ही कम है, and these people are hoarding ventilators as well for their own use. अगर बीमार पड़े then they'll be using it. So this action is also harming others and it must have led to loss of life of many people. तो सिर्फ अपने यहाँ पर नहीं, कई जगह पर यही चीज हो रही है, where super rich people are doing such kind of things. So such people are not just silly, their actions can do real harm to other people. Okay, second question, do you think there are also parents like Mrs. Pumphrey? तो क्या पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं क्या, जैसे मिसेस पंफ्री इज डूइंग विद अ डॉग, तो क्या पेरेंट्स भी करते हैं? सो यस, देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स. बल्कि आजकल जो मॉडर्न पेरेंटिंग है ना, और प्रोबब्ली व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, तो आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन आती जा रही है ना, तो these are parents which engage in over parenting. आजकल का फिनोमेना है, शायद गांव में अभी नहीं होता होगा, लेकिन डेफिनेटली शहरों में ओवर पेरेंटिंग बहुत है कि पेरेंट्स ट्राई टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, कि ये खाएगा क्या, ये पिएगा या ये कैसे करेगा. एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स. कि अगर पॉटी करने जाना है तो पॉटी भी की नहीं है, कितनी बार करेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड शेड्यूल्ड बाय देम. दे आर ओवर प्रोटेक्टिव कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं ये फॉल ना कर जाए, मतलब भागेगा तो गिर ना जाए, तो उसकी वजह से दे स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम रनिंग, कि ज्यादा नहीं भागो, गिर जाओगे. तो दिस इज ओवर पेरेंटिंग एंड दिस थिंग टेंड्स टू हैपन. अब ओवर पेरेंटिंग के अलावा एक और चीज है जो कि बहुत कॉमन है, पुटिंग द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन द चाइल्ड. तो अब क्या करते हैं काफी सारे पेरेंट्स कि खुद नहीं कर पाए तो मेरा बच्चा करके दिखाएगा. So I couldn't be someone, so my child is going to do it now for me. तो
अगर मैं IIT में नहीं जा पाया तो मेरा बच्चा जाएगा. So this is the kind of thinking. तो कोटा में खूब बच्चे जाते हैं आजकल to be engineers, to get into IITs, लेकिन because of such kind of pressures, वो probably उस बच्चे का टैलेंट कुछ और है और आप किसी और चीज में भेज रहे हो, तो ये नुकसान. दूसरा, the children are subject to such amount of pressure कि वो suicide कर लेते हैं. I mean, frequently you tend to hear about these things. News आती है ना कि कोटा में इतने suicide कर लिए बच्चों ने. So why does that kind of suicide happen? So definitely there are parents like Mrs. Pumphrey. तो ये एग्जांपल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है. दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक तो ओवर पेरेंटिंग का दिया मैंने, एक the burden of expectation that parents put on the children. तो दोनों का प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है. Now third one, what would you do if you were a member of staff in Mrs. Pumphrey's household, a neighbor? What would your life have been like in general? तो ये बताना है कि अगर if you were a member of staff in Mrs. Pumphrey's household, उनके हाउसहोल्ड में काम करते हो, तो what would your life have been? तो आपकी लाइफ कैसी होती? Probably it would have surrounded around Tricky and Mrs. Pumphrey, क्योंकि Mrs. Pumphrey was more concerned about his dog rather than the staff. तो most of your time would have been spent in taking care of Tricky, his needs, his feeding and all. तो इस तरीके की चीजें कर रहे होते. You were a neighbor. अगर neighbor होते तो क्या कर रहे होते? So probably if you were a neighbor of Mrs. Pumphrey, you would have been advising Mrs. Pumphrey कि you should not indulge in such kind of things, कि इसको overfeed ना करो, you need to give him more exercise, less food वगैरह वगैरह. तो इस तरीके से advice कर रहे होते. ये these kind of questions, these are open ended questions, relatively open ended हैं, इसमें काफी सारी चीजें लिख सकते हो. These things are not just limited to what is given in the book, उससे थोड़ा सा broader scope में आपको लिखना होगा इनको आंसर्स.